एक एरिया है पानरठन नाम से, वहाँ का रहने वाला हूँ। और शुरुआत मेरी दिल्ली से हुई व्हेन आई वेंट देयर फॉर माय स्टडीज़। तो वहाँ पे मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की थी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ परफॉर्मर। मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगा, बट परफॉर्म somehow I just knew कि I'll come to the performing arts field। क्योंकि बचपन से ही मुझे एक आदत सी थी कि I'm singing or I'm performing and on the stage and there are a lot of people in front of me। और मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि I'll be a professional actor। और ये सफ़र शुरू होता है 99 में। It's been about 20 years now। I was a very small young boy। Yes sir। और मॉडलिंग से शुरू होके I had no godfather। All I had was my confidence, my looks and my physique because of my martial arts background। और जब मैंने सोचा कि I'll try my hands in modeling field, लेकिन कैसे करूँ वो मुझे मालूम नहीं था because I had nobody to guide me। उसके बाद आई यूज्ड टू एनसर्कल ऑल दीज मॉडलिंग वाले एड्स जो आते हैं न्यूज़पेपर्स में, दिल्ली में आते थे। एंड आई यूज्ड टू विजिट दोज पीपल, उनसे मिलता था मैं वहाँ पे। एंड समहाउ आई कुड फिगर आउट कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, हु इज ट्राइंग टू मेक मनी एंड हु इज एक्चुअली देयर प्रोफेशनली। और सफ़र आसान नहीं था। इट टुक मी अबाउट 2 years to actually get established in modeling industry, and after 2 years I was one of the very well known models of Delhi, मीर समर नाम से। उसके बाद काफ़ी रैप शोज, commercials, rap shows, as I say, like modeling, no, rap shows, commercials, music albums, print ads, ये सब ads करने के बाद there was a particular point कि यार what next। तब तक यही था कि like I'll do it for some time। लेकिन तब तक कश्मीर में मेरा एक गवर्नमेंट जॉब मिला था on behalf of my national medal SRO में, बट मैंने वो की नहीं। एंड that was the turning point of my life when I didn't do that government job। तो काफ़ी सुनना भी पड़ा था उस टाइम पे मुझे। और and I wanted to take it as a profession। तब तक मुझे इसका वो जो कीड़ा होता है वो घुस गया था। नेक्स्ट वॉज टू डू सम थिएटर बिकॉज आई अगेन मेरे कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे। थिएटर में जाने के लिए भी आई केम टू नो कि एक प्ले होने वाला है, तो आई वॉज रेफर्ड बाय समबडी। दे वांटेड एन एक्टर हु इज टॉल, हु इज बिल्ट। एसियस सिम्बर कैरेक्टर था जूलियस सीजर प्ले में। तो व्हेन आई मेट द डायरेक्टर ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द पर्सनैलिटी बट ही डिडंट नो वेदर आई कुड एक्ट और नॉट। तो उसने कहा कि नेक्स्ट डे आओ, विल सी वेदर यू कैन परफॉर्म। और अगले दिन जब मैं रीडिंग में गया था वहाँ पे, नेक्स्ट डे आई एक्चुअली कॉल्ड हिम। मुझे बाइक लेनी थी तो मैंने कहा सर मैं आज आ नहीं सकता, मैं कल आऊँगा। सो ही डिडंट लाइक इट। तो नेक्स्ट डे ही वाज लाइक यू नो दीज आर द लाइन्स, वो गुस्से में थे। Who was the director? बापी बोस। बापी बोस वाज द डायरेक्टर। बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर हैं दिल्ली ऑल इंडिया के। और उन्होंने वो पैरा मुझे दिया तो आई कुड फिगर आउट कि ही इज़ एंग्री, क्योंकि पहले ही दिन मैंने छुट्टी मार दी। बट मुझे बाइक लेनी थी इसलिए मैं नहीं गया। तो व्हाट आई डिड वाज आई बिस्मिल्लाह किया एंड जस्ट स्टार्टिंग रीडिंग दोज लाइन्स। आफ्टर आई रेड द लाइन, जब मैंने नज़र उठाई तो ही वाज लाइक अच्छा है। आई वाज लाइक अच्छा शायद मैंने कुछ किया थोड़ा सा, बिकॉज ही लाइक माई प्रोनाउंसिएशन एंड द काइंड ऑफ डिलीवरी जिस तरीके से मैंने उस वक्त किया था। और तब तक मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। दैट वाज, देखा जाए तो फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्टिंग। एंड देन ही एनकरेज्ड मी, ही सॉ सम थिंग्स विच आई डिडंट नो आई हैव। और वहाँ पे ही थिएटर की वजह से ही मेरा पर्सनैलिटी चेंज हुआ, माई कॉन्फिडेंस चेंज, माई रेट ऑफ स्पीच वॉज फास्ट, माई टोन वॉज डिफरेंट। और एट द एंड ऑफ द प्ले ही टोल्ड मी कि जस्ट स्टे अराउंड, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारे में पोटेंशियल है, मेहनत करो। तब मुझे मालूम था कि व्हाट मेहनत, क्या करूँगा इसके आगे, पता ही नहीं था कुछ। बट यही है कि एक दिमाग में यही रहा कि लाइक लगे रहना है।
I just have to keep on going. And after that, मैं कश्मीर में था तो उन दिनों I came to know about National School of Drama's workshops. उसके डायरेक्टर M.K. रैना सर थे. In which year, sir? That was 2003. वर्कशॉप किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का M.K. रैना सर के साथ. एंड वो भी ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ बिकॉज आई वेंट टू ग्रेटर कश्मीर ऑफिस. तो मुझे एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ देनी थी जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट. ऐसे देखा मैंने देन आई सॉ समथिंग नेशनल NSD. मैंने कहा NSD और कश्मीर में ये क्या है. आई टुक दैट लेटर, आई हैड अ लुक एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वर्कशॉप. आई सॉ द एड्रेस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. मैं वहाँ पहुँचा. राजबाग में एक होटल था. वहाँ पहुँचने के बाद मैंने काफ़ी सारे अपने लोग देखे जो जिनको मैं जानता था. इनफैक्ट उनको मैंने कहा था कई बार कि अगर कुछ थिएटर का हो तो बताना बिकॉज मैं उन दिनों आई वॉज एक्चुअली ऑन वेकेशन फ्रॉम दिल्ली. तो तबीयत मेरी ख़राब हुई थी मणिपुर में कराटे की प्रैक्टिस करने के बाद. सो आई वॉज इन कश्मीर और देन आई वेंट देयर. फिर उन्होंने फोटोग्राफ्स मांगे तो मेरे पास नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो थे नहीं, मेरा पोर्टफोलियो था. तो मैंने उसमें से एक फ़ोटोग्राफ निकाली. तो M.K. सर ने देखा ये कौन है. और राहुल देव जैसा बिकॉज माई जॉ लाइन्स वर वेरी शार्प. एंड इन द इवनिंग आई सॉ द लिस्ट और मेरा नाम सबसे ऊपर था. और इट वॉज अ रेजिडेंशियल 1 month वर्कशॉप और घर वालों को मालूम नहीं था. एंड इन द इवनिंग आई टेलिंग माई फैमिली कि आई एम गोइंग आउट फॉर अ मंथ. सो लाइक व्हाट. That was for the first time in कश्मीर में कहीं और जा रहा था 1 महीने के लिए. Then we went to Shalimar University. That was a turning point of my career, of my life. क्योंकि उसमें मैंने बहुत चीज़ें सीखी. At the end of the workshop, I was assistant M.K. sir. पहला प्ले और पहला वर्कशॉप होने के बावजूद काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से नाराज़ भी हुए. ये कौन आ गया नया. That happens. उनकी एक लॉबी भी बन गई थी against me, but I was just concentrating on my work. Set designing, clay modeling, everything I was top. I was leading everything. At the end, मार्शल आर्ट्स की एक सीक्वेंस थी, लाठी फाइट एक सीक्वेंस था, उसमें भी मैंने लीड किया. तो ये सभी लोग उस चीज़ से ये हो गया कि लाइक इट वाज नॉट लाइक मैं कुछ चापलूसी कर रहा था. नो, आई वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किल्स. मेरा एक ही आदत थी कि आई वाज जस्ट completely focused. और that was a turning point in my career. उसके बाद when I went to Delhi, then I assisted M.K. sir again for a couple of plays. Modeling करता रहा साथ साथ. Then I started a part-time job also to check my expenses. दिल्ली में अपने खर्चे निकालने के लिए मैंने मार्केटिंग भी की है. डोर टू डोर टेक्सटाइल करके एक कंपनी थी वहाँ पे एयरटेल की एक लैंडलाइन सर्विसेज. और सफ़र चलता रहा. इट टुक मैनी ईयर्स. तक 3-4 साल में थिएटर करता रहा, सिर्फ थिएटर करता रहा दिल्ली में. और कभी कभी मॉडलिंग का असाइनमेंट भी करता रहा. और कश्मीर में उन दिनों मैंने आफ्टर माई लास्ट इनफैक्ट माई फर्स्ट वर्कशॉप, तो वहाँ पर एक आए थे जो बाद में दोस्त बने, अरशद मुश्ताक. ही वॉज प्लानिंग टू मेक सम फिल्म और एट द सेम टाइम कुछ बनाना चाह रहे थे. तो spoke to me and asked me like if I'm interested in doing a role. क्या है. It was a lead role in Akhtalil Lori's film. तो वो मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था. It was nice क्योंकि सबकी शुरुआत थी, उनकी पहली फिल्म थी. टेक्निकल टीम भी वहीं की थी सारी. और that was again different experience for me all over again. उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई, काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा. But somehow फिल्म अच्छी बनी और मेरा काम भी सराहा गया. Cameraman was pretty happy with my performance because he was amazed that this is my first film. उससे पहले मैंने कैमरा फेस किया था but majorly for corporate films, commercial ads, music albums. But फिल्म के लिए that was my first film. और उसके बाद भी मैंने वर्कशॉप्स किए. मैंने थर्ड वर्कशॉप आई वाज द फैकल्टी M.K. सर के साथ. मैंने वो डायरेक्ट किया था एक skit एक मैंने डायरेक्ट किया था which had more of physicality in it. It was martial arts bound. और then I was planning to shift to Mumbai but somehow I could not. उसके बाद काफ़ी financial difficulties भी आई. Then I had to join HCL BPO. वहाँ कुछ अर्सा रहने के बाद I was transferred in training department. तो वहाँ वो एक दौर मेरे लिए ज़िंदगी का एक अच्छा रहा बिकॉज तब तक काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की थी. और
दैट केम एज रेसिपी क्या थोड़ा सा एक सुकून सा उससे ये हुआ क्योंकि आई गुड जॉब, गुड सैलरी, वन रूटीन, तो आई कुड वर्क ऑन माई हेल्थ. मैंने अपने वर्क सेहत पे दोबारा ध्यान दिया. माई कॉन्फिडेंस वॉज लो, वो वापस आ गया. माई फिनेंसेस वे लो, वो थोड़ा सा ठीक हो गया. बट आई डिडंट प्लान टू स्टे लॉन्गर देन 6 months और a year. बट समहाउ वो चलता गया क्योंकि मेरा बॉम्बे जाने का प्लान डिले होता गया एंड आई वाज वर्किंग विद HCL फॉर मोर देन 2 years. एंड व्हेन फाइनली आई डिसाइडेड टू क्विट, माय कंपनी डिडंट अलाउ मी टू, सो लाइक बिकॉज आई वाज जस्ट वर्किंग. लेकिन उस दौरान मैंने एक चीज़ अच्छी की जो मुझे अच्छा लगता है आज की तारीख में. मैंने एवरी डे आई यूज्ड टू गो होम एंड वॉच अ फिल्म, 1 film a day, हॉलीवुड फिल्म. उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर बहुत हुआ और मेरा जो काम है दैट वाज एक्टिंग का स्टाइल मेरा अलग था. जब उसके बाद मैंने कश्मीर में सीरियल्स किए, एवरीबडी से लाइक तुम्हारा एक्टिंग का स्टाइल अलग है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट डू यू डू? लाइक आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट ऑब्जर्व्ड एंड आई जस्ट वॉच सॉर्ट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स. और मैं शिफ्ट के बाद फिल्में देखता, शिफ्ट के बाद मैं जिम ऑफिस में ही करता. इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो होम, प्रे एंड स्लीप. एक रूटीन बन गया था काफ़ी टाइम तक. फाइनली इन 2010 आई लेफ्ट दैट जॉब. सो लाइक जिस चीज़ के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है एंड आई एम नॉट डूइंग दैट, सो इट्स गुड टू स्टिक टू व्हाट आई वांट टू डू. फिर आई वॉज विद मुजफ्फर अली साहब फॉर सम टाइम फॉर हिज इवेंट्स इन दिल्ली, जयपुर. आबिदा जी के जहान खुसरो करके वो इवेंट करते थे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट कपल ऑफ टाइम्स. उन्हीं दिनों कश्मीर से एक फ़ोन आया था बाला साहब का कि उनके साथ एक फ़िल्म करने का प्लान किया था उससे पहले, लेकिन वो हो नहीं पाई थी. देन ही सेड लाइक I'll cast you with something else. वो एक सीरियल करने के लिए मैं कश्मीर गया था वापस, तो लाइक I'll finish this and I'll go back. लेकिन वो सीरियल के दौरान ही कुछ प्रोड्यूसर्स सेट पे आए. दे लाइक माई वर्क, सम लाइक माई लुक, सम लाइक माई स्टाइल. किसी ने एडिटिंग पे देखा, किसी ने सेट पे देखा, किसी ने फोटोग्राफ देखा फेसबुक वगैरह पे. ऑन बैक टू बैक मैंने एक सीरियल करने के लिए गया था. आई डिड अबाउट 30-40 सीरियल्स ओवर द स्पैन ऑफ 1.5 years. रीजनल कश्मीरी, रीजनल DD काशिर सीरियल्स, कश्मीरी उर्दू दोनों लैंग्वेज दोनों की थी. और काम सराहा गया इसी वजह से उतना काम किया. और उस टाइम पे भी एवरीबडी वॉज ये कौन आ गया नया. दो आई वॉज नॉट न्यू, आई वॉज 11 years ओल्ड इन द इंडस्ट्री. मॉडलिंग इंडस्ट्री मैंने 1999 में शुरू किया और कश्मीर के लिए नया था. बट माई लुक वॉज डिफरेंट, माई स्टाइल वॉज डिफरेंट, माई एक्टिंग स्टाइल वॉज डिफरेंट, माई अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ वॉज डिफरेंट. आई ऑलवेज हैड अ कैमरा विद मी. वो पैशन था मेरा फोटोग्राफी का. उसके बाद मुझे कल्चरल अकेडमी से फोटोग्राफी में अवार्ड भी है मुझे मिला है. एंड आई हैड एन एज ओवर अदर थिंग्स. तो उसके साथ साथ ही माई बॉम्बे ड्रीम ऑलवेज रिमेन्ड है, वो हमेशा था मेरे पास. एंड आई ऑलवेज मेंटेन माई प्रोफाइल प्रोफेशनली. मैंने कभी आड़ी टेढ़ी सेल्फी रियलिटी टाइप की पिक्चर नहीं अपलोड की. आई ऑलवेज अपलोडेड डिसेंट पिक्चर्स. एल्बम्स का नाम रखा, फोटो एल्बम जितने थे सारे, कवर फोटोग्राफ्स, डिस्प्ले पिक्चर्स, ऑलवेज मेड श्योर इट्स गुड. और उसी के बिना पे आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म फैंटम. Somebody was a casting director named Hanif Rehan was looking for actors and he came across my profile and he contacted me on Facebook. That's how I was approached for my first film. तो एक फिल्म उससे पहले मैंने 2013 में की थी, दिल पतंग नाम से, जो रिलीज़ नहीं हो पाई. That was my friend मनोज अधिकारी. उनके साथ मैंने एड्स किए थे मॉडलिंग के काफ़ी. इंडिगो एयरलाइंस का एक बड़ा सा एड किया हुआ था उन दिनों, वो भी मैंने किया था उनके साथ. और फैंटम करने के लिए जब मैं वहाँ गया, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू बॉम्बे फॉर वर्क. और लकीली वैसे ही पहली बार मैं जब बॉम्बे गया, आई वॉज देयर फॉर वर्क एंड नेक्स्ट डे आई वॉज इन नडियाडवाला ग्रैंडसन्स ऑफिस एंड आई साइन द एग्रीमेंट. आई साइंड ऑल द पेपर्स एंड माई लुक टेस्ट. मेरे लुक टेस्ट में इंटरेस्टिंग ये चीज़ हुआ कि पीपल कॉस्ट्यूम के जो डिज़ाइनर्स थे, they gave me a lot of different costumes with a lot of different get-ups. And every time I used to come out, say like, is this the same person? I looked different in every get-up. So that was what was needed. Because the character had 26 passports. जो फिल्म में मेरा कैरेक्टर था. So I looked different in beard, without shave, without beard, French moustache. So that was an advantage. And while doing that film, while we were shooting in London, तो 2014
जून जुलाई की बात है. Kabir sir told me we were shooting in Tube, London में. They're like, I have something interesting for you in my next film. I said that would be a pleasure to work with you again. और तब मुझे यही नहीं मालूम था कि अगली फिल्म बजरंगी बाजान. एंड जब फिल्म कंप्लीट हुई फैंटम हमारी 2013 में ही, और उन्हीं दिनों यहाँ पे फ्लड्स वगैरह भी आए थे कश्मीर में. तो 2014 सॉरी. बजरंगी बाजान जब शुरू हुई तो it was a different character altogether. So like पहले it was Phantom में I was stylish negative character, one of the 4 villains. इसमें it was a different character, एक emotional सा, एक मुन्नी के पापा का रोल था, very emotional. The first thing was like you are more extremely emotional as a man. तो I just वो चीज़ मैंने पकड़ के रखी and I maintained that. I tried to maintain that as much as I could. और लोगों ने सराहा, और पहले वही फिल्म रिलीज़ हुई, फैंटम से पहले वही फिल्म रिलीज़ हुई, और 2-2.5 महीने बाद फैंटम भी रिलीज़ हुई, और बैक टू बैक 2 फिल्म्स दैट हेल्प मी. बजरंगी से मुझे पहचान मिली. बम्बई में भी लोग पहचानते हैं आज की तारीख में, इतने बड़े शहर में. यहाँ तो खैर है ही, जो कश्मीर में है कहीं और होते हैं तो वहाँ तो लोग पहचानते ही हैं. तो बजरंगी बाजान ने काफ़ी हेल्प किया. अब इन 2 फिल्मों के आने के बाद, while I was finishing my work for बजरंगी बाजान, I was approached for डिशुम. डिशुम का स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. I gave 4 different auditions at 4 different places, but one thing which I did was I changed my look and attire and acting style in every audition. That is what Rohit liked. Rohit Dhawan, director of the film, liked. He gave me a character which had a double role, who looked different and whose acting style was different. He gave me that challenge in front of him. ये कर सकते हो? मैंने कहा कोशिश करेंगे. And we went to Morocco to shoot that film. और उसके बाद एक फेज ऐसा आया कि फिल्में हुई, there is no work in hand. ऐसा like क्या something is wrong somewhere maybe. लेकिन I didn't give up. There was a time when I only used to have 1 meal a day. I stayed in a chawl also in Mumbai, but I didn't give up. I just stuck it, because as one of my friends has mentioned, like passion, persistence, and patience is the key to get success in this field. तो वो करता रहा, और eventually that patience paid, and I got Jolly LLB2 film. उस वक्त तो 3 फिल्में साथ में आई, and I had to leave नाम शबाना. I did 2, Carter Villa Maniratnam sir's film और Jolly LLB2. और आहिस्ता आहिस्ता word of mouth went out. I used to go for auditions, modeling auditions के लिए. उससे पहले भी, Phantom के टाइम पे भी, 2013 में भी. I used to just distribute my number. You are not fit. Okay, what is your email ID? This is my email ID. Okay, this is. I used to send mails and distribute my number. और उसने काफ़ी help किया मुझे बाद. Because एक number जब spread हो जाता है इंडस्ट्री में, प्लस आपके 1-2 फिल्में आती हैं, your look is there, and whenever they need a reference, अच्छा फलानी कैरेक्टर को बुलाओ, बजरंगी बाजान वाला, and that's the reason I kept Baird after that, because people recognized me like that. And I got many roles after the same. In fact, there were like 3-4 films जिसमें दाढ़ी नहीं है. जगा जासूस, लैला मजनू, अयारी. I'm a clean shaven in those films. In fact, Phantom में भी. But most of the films which I've done, I have Baird, because that's the kind of characters which I'm getting. So at times they say like it's not good to get stereotyped, but at times it's okay, because when you're an outsider, if you're getting stereotyped for something, that means you're getting work. Once you're getting work, there will be a stage when you'll be financially stable and there'll be some sort of name in the industry. Then you can take decisions to choose what kind of roles you want to do. That's what I did. I didn't say no to most of the work. There is very less projects which I've refused due to one reason or the other, either ethical or something else. Recently I've left one big film. They didn't excite me. That film didn't excite me because I won't use the name of the film because that's a big bad luck. Ultimately I myself wanted to be a filmmaker. So उसी दौरान जब हम कश्मीर में थे, जिन दिनों फैंटम का शूट शुरू हुआ, उन्हीं दिनों फिर हमारी एक और फिल्म जो कश्मीर डेली कश्मीर में हम बनाना चाह रहे थे, उसका भी काम शुरू किया था हमने. एंड दैट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट.
we didn't know कि वह ये बन भी जाएगी कि नहीं. Hussain Khan and me, we met in 2012 and उसी साल हमने वो फिल्म शुरू की. I did camera for the film, Hussain did camera for the film. दोनों ने बहुत मेहनत की उस चीज़ के लिए और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली नहीं. They were there to help us out. मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से बात की, मेरे भरोसे पे काफ़ी सारे लोग आए, हुसैन साहब ने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया. And that film was complete ultimate because of बजरंगी भाईजान उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि बजरंगी रिलीज़ हुई और I was, of course there was a name, Kashmiri actor is working with Salman Khan. बजरंगी भाईजान was a big hit. कश्मीर डेली के टाइम पे people, journalists, most of the journalists use that as a reference. Bollywood actor of Bollywood, bajrangi bhaijan, उसका एक और फिल्म आ रहा है कश्मीर डेली के नाम से. काफ़ी हेल्प हुआ उससे और वो फिल्म कंप्लीट हुई. उसके बाद मालूम था कि करना क्या है. It took us a long time to understand. उसकी हमारी जो एडिट फाइनल हुआ था जितना हुसैन साहब ने किया था, उसके बाद बॉम्बे में फिर से हम बैठे उस पर एंड he asked for suggestions कि क्या कर सकते हैं और बताओ. तो आई लगे यहाँ पर ये हम हटा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हटा सकते हैं. एंड ऐसा करने के बाद हमने तकरीबन 18-20 मिनट फिल्म के काटी, जिससे स्टोरी पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों से फिल्म ड्रैग हो रही थी. एंड फाइनली वी डिड रिलीज दैट फिल्म ऑन बकाओ PVR का एक प्लेटफॉर्म है. एंड इरोस नाउ ने वो फिल्म बाद में ली. इरोस नाउ, that film is available on Eros now as well as Jio Cinema. So, may you sir tell us about what happened after Kashmir Daily? How was the response, and then after how your journey took place in Indian film industry? तो वो तो उससे पहले ही शुरू हो चुका था. And then after how was the only difference was, you know, it gave us more confidence to take risks, and the result was we made another film, Bed Number 17, which was known as Father, which I directed, and there was a role reversal because in Kashmir Daily I played the lead character and Hussain Saab directed it, and in this film I directed the film and he played the lead character, and along with Rishi Bhutani, he's a well-known actor from Bombay. So that's a story of a father and son. It's a beautifully made film. It was very difficult to shoot in Roza Ramzan 2018. We almost did 1.5 shifts every day, and we finished the shoot in 12 days because we had a deadline. Eid se pehle khatam karna tha, and it has turned out very well. Shaped up beautifully. Uska BG ho chuka hai, uska DA pe kaam chal raha hai, and hopefully by the end of this year that film also will release. And कश्मीर दिल्ली बनने के बाद से ही हमारा एसोसिएशन भी हो गया राहत कासमी के साथ. ही इज यंग टैलेंटेड डायरेक्टर फ्रॉम JNK. मेक मोस्टली ही वर्क्स ऑन इंटरनेशनल फिल्म्स. Okay. तो एसोसिएशन उनके साथ हो गया है. दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर डेली एंड अदर फिल्म्स. एंड आई डिड couple of films with Rahat before. There was Side A Side B, which is not released yet. It's a beautiful film which was initially supposed to be produced by Farigama, but later on that changed. उसके बाद लिहाफ is another beautiful film which I'm part of. I'm playing the lead character in that film. और वो उसका हाल ही में world premiere हो चुका है. Tanishta is playing another lead in that film. So I'm looking forward to that film because these are certain films which will definitely change the course of for us as filmmakers and for me as an actor. क्योंकि lead characters. उसके बाद अभी एक और फिल्म मैंने रात के साथ की है हाल ही में, Country of the Blind. So independent तो हमारा चल रहा है साइड में. We have to ultimately make our own films, no matter how small or big they are. वो हमारी अपनी फिल्में होंगी. We'll take these local stories and make social films. We'll try to make social films. We'll avoid politics because of the obvious reasons. And we'll just tell our stories to the world, and that's what it is. And besides, yes, Bollywood is there. Like I've done some international films also. There was one Vanguard with Jackie Chan, one Indo-Australian film, Shambhala, and many films released so far. Many of them are under process, and Panipat will release in end of this year.
This year, March, there were like 3 films which released. Hamid, Kesari and Notebook, which was good. And I've done some regional films also. I've done lead negative characters in regional films. So, after doing a good number of films, how has your acting process evolved after all doing all these? Yes, definitely it has, because you learn with every project. You learn with every director you work with has a different style, and he wants a particular scene to be enacted in a different manner. So whenever you do it, you're ready as a clean slate. Because if you go there with a mental block and prepared, then you're not able to change that particular thing. So you just have to be director's actor. Whatever he wants or she wants, you should perform accordingly. Variation has to be there. As an actor, I've observed there are many things, many of my serials which I've seen which I didn't like. I experimented with my way of dialogues, delivery, my expressions, my body language. But some I liked, some I didn't. And well, most of the time I say like there's room for improvement, which is good, because if you say like you're complete, then you're gone. So the process is still on. I'm still learning. I'm here for another film, and Sher Shah, Dharma Productions film. And director was very happy yesterday after I shot these 2-3 scenes yesterday. He was happy, and the writer was there. He was also happy, and I gave them a couple of variations. That's an advantage, because if you're open to changes, if you're open to suggestions, then you can change. You can give them variations, so that like director has options to understand, which one is good, which one is not. So until now, which is your favorite character? And tell us about that character and that film. I would say, every character is important and every character is close to my heart. But Kesari is something which I would mention, because that I can say that's my first mainstream Bollywood film's lead character. I did play the negative lead in Kesari, Dharma Productions film. Anurag Singh was the director. An amazing person, an amazing director. He has written the film, and he was very clear what he wants. And in workshop itself, I understood what he is actually looking for. On sets, I stuck to what he is looking for. And I've maintained that, because that film was shot over the span of a year. And playing the same character and one day for many months is difficult. Because it was the same war which is happening in the month of March, April, May, then again September, October, November, December. So it was the same. Attire was the same. You had to maintain the same mood. The dialogues were good. As far as my character was concerned, it was negative character, but it had an edge. It became, it had a positive at the end of the film. At the end of the film. So I would say yes, that was one role which I would like to mention here. And Panipat is again, that has more shades, more variations. Lihaf is a good role. Kashmiri is of course one of the best roles which I have done. And still, best is yet to come. That's what I feel. Okay, Mir Sahab, what do you think about the present, this time, the time through which Indian film industry is going, the kind of films are made, and the kind of platforms like Netflix and all that? So how do you see this time for an actor like you? It's a good time for everybody, because filmmakers are taking chances with stories. They're not following the formula nowadays. Our audience is mature enough to understand, and because there are some small films which did good. Andhadhun did brilliantly. Newton, Badai Ho, Shubh-Mangal. They're all small films. Otherwise, in this, there are no formula films. The time has gone. Audience is mature enough to understand these days, and there are a lot of options after watching these Netflix, all the OTT platform films and series of Hollywood and world cinema. The horizon has increased, and they don't simply want that fight, romance, and action. They want stories and human stories, which they can connect with. And for an actor, earlier he had only option of TV or
films. Now he has many platforms. It's good for all the actors, because if you have a lot of platforms, that means a lot of series are being made, and if a lot of films and series are being made, they need actors, and it's good for everybody. It's good for all of us. It's good for independent filmmakers like us, because more platforms we have, we can sell our films to them. Initially, there was hardly any online platform, and we had to visit Doordarshan or some other private channels to sell our film for satellite rights. But now there are so many rights a person can sell his film to. The digital rights are there, airborne rights. There are so many other rights which a person doesn't know about. So it's a good time for filmmakers as well as an actor. So, how many films are you in the future pipeline? Tell us about those characters or those films. Major mainstream Ashutosh Gowarikar sir's Panipat will release in the month of December. My Telugu film Chanakya will release in October. I did play a lead negative character in the film, and my web series will release on 20th of this month, The Family Man. With Raj and DK, Manoj Bajpayee is the main lead in that. My another Netflix web series, Bard of Blood, is coming. There's another web series, I don't know which platform they'll release it on, that India Strikes. It was this name, but I don't know what the name has, because they are thinking of changing the title. So I am playing a positive character in the film, playing the character of journalist. Looking forward to that character also. And there are some other films which are made but have not released yet. Lihaf is one. But number 17 is my directorial debut. That is another one which I'm looking forward to. Country of Blind is the other one which I'm looking forward to. And there are many other films which we shot long back but haven't released yet. And there are some more projects in the pipeline and on the finalizing stage. And this film which I'm shooting right now, Shirshah. So great! It's great to hear that. In future you have full dates or you are fully occupied. But tell me about at this time when you are fully occupied with work and there are some future projects also. Tell me about the hunger for work and the time of your struggle. How much it was important to grow you as a person, and how much it helped to be a person that you are now, or an actor you are now. That helped. It was very, I think like today I can simply say that it helped me to be a better person. It helped me to be humble, which is very important. Because if I wouldn't have gone through that stage, that hardship, that struggle of mine, I won't call it a struggle, it's a journey actually. It's a process. And everything teaches you one thing or the other in the time to come. And it helped me as an actor also, because that time I was completely focused. I don't socialize much. I used to watch some good content. I used to write some good content. I used to think about some good things. So that helped me to learn and experiment with what I was doing. I was part of one production house also. I was writing for them for 4 months. That also helped me. And if I wouldn't have seen that hardship, maybe I would have been kind of an arrogant person. You never know. Absolutely. Because if I'm humble, I'm trying to be humble as much as possible, always. And hardship of Delhi and hardship of Bombay has helped me. Because I remember when I was doing my modeling, 99, 2002, I was a different person altogether. My confidence was high. I was young, good-looking, with a good, amazing physique. And maybe if I would have started acting that time and would have got success then, maybe I would have been a different person. My approach was, life would have been different. But you never know. I believe whatever happens for your good. And it took time. It took about nearly 2 decades to be where I am. And definitely there's a long way to go from here as well. And I'm learning as much as I can. And at the same time, I'm sharing my experience to youngsters who want to be an actors, who want to be... What will be your message to them who are aspiring filmmakers or actors or writers? Just believe in themselves, just believe in their craft, work on their skills. Don't
go unprepared. If you go unprepared, then you know the result. Take time, learn, just understand what your USP is. Looks are good, but that doesn't mean you'll be equally good actor until and unless you don't work on your skills. Yes. You'll say like I'm a good looking boy, I'm a good looking girl, I'll go to Bombay, I'll become a hero or heroine. Usually it doesn't happen like that. Until and unless you don't work on your skills, you won't. What if just in case you get an opportunity to work with some good director in a good film and you are unable to deliver, that means you did lose that opportunity which you got. Your preparation meets an opportunity is luck. You have to keep yourself prepared, keep learning, and once that opportunity is there, that's the luck. Then you click. Then there's no turning back. There's no looking So, back. sir, last question. You are nowadays in Ladakh, particularly in Kargil. So, how do you experience the place, and what are the potential regarding the place and stories related to here? If some few youths in future will be trying to tell stories over from here, what would be your suggestion for them, and tell us about this place, Kargil? What are your experiences? It's a beautiful place. It's for the first time I'm visiting here, Kargil, Ladakh. I visited a couple of times for my shoots. I love that place also. But I don't know, I'm fond of this particular place. I can simply feel that difference. And for filmmakers, yes, they should come here to shoot often because Kargil is a beautiful place. People are so warm, so good looking, and so nice people. Warm. Plus,